नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। इकोनॉमी के मोर्चे पर डबल खुशखबरी। रिटेल महंगाई में गिरावट का सिलसिला जारी, 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंची। वहीं आईआईपी में हुई बढ़ोतरी। भारत को लेकर बुलिश है ब्लैकस्टोन। भारत में निवेश 2 गुना करके 100 अरब डॉलर तक पहुंचाएंगे। ब्लैकस्टोन के चेयरमैन ने मनी कंट्रोल के साथ सुपर एक्सक्लूसिव में कहा कि पीएम मोदी और ट्रंप के अच्छे रिश्तों से जल्द सुलझेगा टैरिफ का मुद्दा। भारती के बाद सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए स्टारलिंक का जियो प्लेटफॉर्म्स के साथ करार। सरकार जल्द दे सकती है सैद्धांतिक मंजूरी। स्टारलिंक भारत में ग्राउंड स्टेशन लगाने के लिए भी तैयार। उतार चढ़ाव के बीच बाजार की फ्लैट क्लोजिंग। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे से सुधरकर बंद। निफ्टी बैंक बढ़त के साथ बंद। आईटी रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट। बाजार में गिरावट में हिला निवेशकों का भरोसा। फरवरी में इक्विटी फंड्स में निवेश 26% घटा। लार्ज कैप के साथ मिड कैप स्मॉल कैप में भी निवेश घटा, लेकिन एसआईपी में अब भी करीब 26,000 करोड़ का निवेश जारी। पीएम मोदी के दौरे पर भारत और मॉरिशस के बीच 8 समझौते। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए पीएम मोदी। मिला मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान। परेड में भारतीय नौसेना का फ्लाई पास्ट भी हुआ। पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक मामले में बीएलए का बड़ा दावा। कहा सभी आम नागरिकों को रिहा किया। पाकिस्तानी सेना के 150 सैनिक अभी भी कब्जे में। 30 सैनिकों के मारे जाने का भी किया दावा। ब्लैकस्टोन का भारत पर नजरिया काफी बुलिश है। साथ ही ब्लैकस्टोन भारत में अपना निवेश डबल करने वाला है। ब्लैकस्टोन के चेयरमैन एंड सीईओ स्टीफन स्वाजमैन के साथ नेटवर्क 18 के ग्रुप कंसल्टिंग एडिटर बोधिसत्व गांगुली ने कई बड़े मुद्दों पर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए देखते हैं पूरी बातचीत। Our guest founded Blackstone, the world's largest alternative asset management company by some length, exactly 40 years ago. We are delighted to welcome a colossus of the world's private equity industry, Steven Schwartzman. Steve, welcome to Money Control. Well, it's great to be here. Thank you, Steve. So it's 40 years since you set up the company. When Ronald Reagan was president and Gorbachev was general secretary when the Soviet Union was still around. I'll just come to that in a moment. It's also your 20 years in India, right? Blackstone entered India in 2005. You have more than 1 trillion of assets under management worldwide. India is still just about 5% of that. India is about 50 billion if I've got the numbers right. How do you is there a number that you can give us to our viewers in terms of how this number can go up? Can 5% become 10% or 15%, and over what kind of period of time? Well, it's great to be back in India. When we decided to come here, we announced that we would put $1 billion in India. Right. And people here probably forget that 20 years ago that was a huge number. And we were on the front pages of all the newspapers. And now, as you say, we're many times what we expected to be, because the country is such a great place to operate. India happens to be our #1 performing market in the world for Blackstone. Our returns here on a gross basis are somewhere around 40% a year, way in excess of any other market. And we've spent our time building businesses in India to make India better. And we foresee being able to double where we are, to have a total exposure of $100 billion at some point in the future. We're rapidly growing
here in India. We're the largest foreign company in the country. We're the largest owner of real estate in the country. We're the largest private equity firm here. And we're in all kinds of interesting areas. And we found that operating in India is great, and we're very bullish on the future of the country. I know the stock market's gone down a bit lately, gets people nervous. In 20 years we've been here, this isn't the first time we've seen that. So we look at the fundamentals in the country. You have excellent stability of political leadership. Regulations have gone down from where we started. We see a very vigorous population, a lot of young people, sort of a preference for technology, technology industries. So we are very positive on the country, and it's great to be back. Thank you. So you're talking about 100 billion of assets under management in India. Over, that is, if you were to double that number. No, you gave us the right number, and we think we can grow to $100 billion. Right. Has it, you've been here for 20 years. In these years that you've been here, has it generally become easier to do business in India in terms of regulatory environment? And more importantly, what are the changes that you would like to see? Well, it has gotten India easier. It was pretty difficult for a foreigner 20 years ago. And we had some investments that didn't work out as well. Right. What we did is we learned how to work here, and the country changed as well. But what we learned is that we were best off owning businesses ourselves and being able to control the direction and success so we can build really successful businesses. We learned that just being minority partners wasn't to our taste. It's not what we do in other places in the world, and it was done 20 years ago a lot, and we just defaulted to what we're comfortable doing, and with growth rates at that time in the 9% area, now in the 6.5% area, that's amazing growth by global standards. And if you control assets, whether they're real estate assets or corporations like we do, then things go quite well for you here in India. Right. So you are the country's largest landlord. You also have a large presence in the healthcare industry in the recent past. What are the other sectors that you could get into? Would you get into areas like data centers, for instance, or some of the what is referred to here as startups, consumer-enabled internet companies, those kind of areas? Oh, actually, our biggest exposure here, we'll continue to do more, is in technology. Right. And all kinds of expressions of what technology means. So, for example, Blackstone is the #1 developer of data centers in the world. And we're also the #1 owner of data centers. And this is just the start of the data center industry for India. And we can see very substantial growth there as artificial intelligence becomes much more widespread. The growth numbers are stunning in the rest of the world. And off of that base, along with the energy that's needed to power data centers, we would call it energy transition investing is a big focus here. As you mentioned, healthcare is also important given the size of the population in India. We have the second largest hospital group in the country. That's right. Among other things, and we can see more growth in that area as well. Right. Since we have the honor of having you here, it would be remiss not to ask a few questions on what's happening around the world in the global economy.
So there are two narratives essentially. One narrative is that we are on the cusp of perhaps an AI-driven productivity boom, coupled with the deregulation that President Trump has promised. What are your views on that? Well, I think AI is something I'm deeply involved with, starting in 2015. And I ended up making a philanthropic gift to MIT, which is our largest technical university, for their College of Computing. And so even though I'm not a technologist, I hang around people like that, Sure. who are in the cutting edge of that technology. And what they have believed, really since I got involved, and what they believe even more strongly now, is this is going to be a transformative technology. We're just starting to see it. It's sort of like now the invention of electricity, and nobody knew what to do with it at the start other than a light bulb. Right. And now we use electricity for virtually everything, whether it's your air conditioner or your refrigerator or your washer or, you know, all kinds of activities. And so we're just starting to develop applications for artificial intelligence. And there are some people who believe that within 5 to 7 years, there's going to be a huge jump start when we get to what's called AGI, artificial general intelligence. Yeah. And so there's going to be a lot of changes as a result. Some will be very good. There's conventional wisdom, is that the invention of drugs that help keep us all alive is going to go up by probably at least 3 times, and much cheaper to develop drugs while you're doing much more volume. Education will change with individualized education that can be beamed around the world, and it's particularly important for countries that have, you know, low GDP per capita, people who don't have much money, don't have great education systems, and there'll be a variety of transformations. On the negative side, there'll probably be some change in the number of people who there will be job losses and so right, who can do certain functions. There's also a risk, you know, that criminals who, as a rule, aren't so smart, they can be smarter with AI, and you have a risk of AI being used by rogue states. So it's a technology that needs a careful control over time, but the prospects for wonderful achievements for human beings are definitely there. Could AI technologies draw up a term sheet, for instance, or structure a private equity deal? In terms of private equity? Yeah. With AI? Yeah. Well, you know, if private equity owns businesses, Yeah. that's its job. And businesses will be affected. Some areas can be Right. replaced. Humans can be replaced. If you talk to the people who are pioneering products, the objective of AI is to work with people in the knowledge industries so that they can do research that would normally take weeks or longer. You'll be able to do that within 5 minutes. And so it'll be like having a very powerful, you know, group of people working for you, except it's just a machine. Right. So I talked about narrative. Now there is of course the narrative of an AI-driven productivity boom, but right now I think the narrative which is dominating the airwaves, as it were, is the disruption or the uncertainty caused by tariffs going up and down. What are your views on that? How does one navigate this? Will this sort of die down? Is this a short-term situation, and the new administration will get its bearings, will find its footings, and find its footing, and things will sort of come to some kind of an equilibrium in a few months? How do you see things panning out? Well, I think it's pretty clear that there's been a change, and that tariffs are on the table.
The reason for that is the prospect of countries having equal access to each other, which is a good theory of the case. And so it'll take a while for that to work its way through. But I think the world will be able to absorb those types of changes, and then we'll move on. There'll be some period of uncertainty, which is what's prompting your question, which should affect markets over the short term. But I think this is a short-term phenomena. There are all kinds of adjustments that occur were tariffs to be applied to a country, currencies get weaker, there's shared cost between people who make goods, people who buy goods, and the system should accommodate all of that. Right. You worked closely with President Trump, especially in his first term. India is about to negotiate a trade deal with the US. One doesn't know exactly how much time it will take. What would you advise India's political leadership to do when they approach negotiations with President Trump's administration? Well, let's just start out. I'm not a government official. No, of course. I'm just we're very clear about that. Somebody who knows almost all the people involved with these types of things. First of all, Prime Minister Modi and the President had a very good meeting, which is a great start, and they agreed to have a trade agreement between the two countries. And they also made some other mutual understandings, evidently, at that meeting. And so I think that the baseline for India seems to me to be very good. There's a good relationship with the two principals. There's a lot in common. There's a favorable attitude, each country to the other one. And I think you just sort of start with the discussion. Evidently, there's already been a number of adjustments that the two countries have made. So I know there's always a high level of anxiety when anybody brings this subject up, but I think the quality of your leadership in India and the ability to reach agreements should be very good. Just to come back to India for a moment, there is the China +1 strategy which most MNCs are following. Blackstone has a presence across a wide range of industries. Now, India fancies itself as the +1, although there are competitors like Vietnam, most prominently, perhaps Indonesia as well. Do you see India's name coming up as a possible substitute for China when it comes to global supply chains? Well, I think it's been a difficult time period for China. Right. They will go through some adjustments as well to their benefit. But at the moment, India became, sort of top of mind for the business community as an alternative. Right. And that's a great opportunity for India. And I think it's important that India capitalize on that opportunity. It's got sort of low-cost labor, smart people. It's got some challenges with logistics and internal infrastructure compared to China, but there's a sort of a curiosity about India now. You must look at it if you're a corporate executive that's manufacturing offshore, and so it should work out quite well for India. Right. So I'm being told to wind up. So Mr. Schwartzman, thank you so much. Thank you so much for giving us time. Thank you. Thank you. तो अभी एक छोटा सा ब्रेक, कुछ खबरें ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। फिर से आपका स्वागत है। होली से पहले इकोनॉमी के मोर्चे पर डबल खुशखबरी आई है।
इस खुशखबरी ने ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद भी बढ़ा दी है। रिटेल महंगाई में गिरावट का सिलसिला जारी है। फरवरी रिटेल महंगाई 4.31% से घटकर 3.61% पर आ गई है। ये पिछले 7 महीने की रिटेल महंगाई का सबसे निचला स्तर है। इसके अलावा महंगाई आरबीआई के 4% लक्ष्य से नीचे भी पहुंच गई है। फरवरी में खाद्य महंगाई में अच्छी खासी कमी दर्ज की गई है। दाल और सब्जियों की महंगाई में भारी गिरावट हुई है। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण महंगाई दोनों में कमी देखने को मिली है। हालांकि कोर महंगाई में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और दूसरी खुशखबरी है आईआईपी के मोर्चे पर। मैन्युफैक्चरिंग के दम पर जनवरी में आईआईपी ग्रोथ 3.2% से बढ़कर 5% हो गई है। इस दौरान मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। माइनिंग में भी अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली है। प्राइमरी गुड्स ग्रोथ भी बढ़ी है। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी और कैपिटल गुड्स ग्रोथ में गिरावट दर्ज की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स की ग्रोथ भी गिरी है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ग्रोथ भी घटी है। और होली की तैयारियों के बीच मिठाइयों का बाजार भी सज गया है। तो होली की सबसे खास मिठाई क्या है? गुजिया। लेकिन सबसे अच्छी गुजिया कहाँ मिलेगी, ये देखने के लिए हमारे संवाददाता रोहन सिंह पहुंच गए दिल्ली के मिठाई डेस्टिनेशन चांदनी चौक, जहां 100 साल से भी ज्यादा कई पुरानी दुकानें सजी हैं गुजिया से। होली का समय और होली का मतलब है गुजिया और पकवान। और दिल्ली में सबसे अच्छी गुजिया कहाँ मिलती है, ये देखने के लिए हम पुरानी दिल्ली आ गए। और ये दुकान है कंवरजी भगीरथ मल की, 1850 में बनी है। और यहाँ जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये सारे लोग गुजिया के लिए आए हैं होली से ठीक पहले। क्या खास है यहाँ की गुजिया में, आइए देखते हैं। ये है दिल्ली की सबसे मशहूर गुजिया की दुकान, कंवरजी की दुकान। 1850 से है यहाँ पर। और यहाँ पर जिस तरह की भीड़ लोगों की आप देख रहे हैं, ये सभी गुजिया के लिए यहाँ पे आए हैं। क्या खास है, क्यों यहाँ पे आपकी जो गुजिया है तो क्या चीज़ है जो इसे खास बनाती है? हमारी जो गुंजिया है वो 175 साल पुरानी, टेस्ट जो लोगों का था और देसी घी की गुंजिया है। इसकी जो वैरायटी और इसका टेस्ट है वो पुराने हमारे बाप दादाओं के उससे चला आ रहा है। इस समय होली का समय आ रहा है, क्या खास के क्या वैरायटीज दे रहे हैं आप गुंजिया? सर हमारे पास जो गुंजिया की वैरायटी है वो केसर वाली गुंजिया ड्राई फ्रूट की है, और चाशनी वाली गुंजिया ड्राई फ्रूट की है, और बिना चाशनी की सूखी वाली गुंजिया ड्राई फ्रूट की। आमतौर पर क्या कीमत रहती है? सर इसकी कीमत 900 रुपए से लेकर के 760 रुपए से लेकर के 900 1000 रुपए तक की होगी। इस समय जो आमतौर पर मार्केट में हम देखें, आर्टिफिशियल कलर लोग इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल चीजें इस्तेमाल करते हैं। हम कह सकते हैं कंवरजी की जो गुजिया है बिल्कुल शुद्ध ऑथेंटिक है सर। जो केसर की गुंजिया है उसमें हम केसर घोट के ही बनाते हैं, हम कोई कलर यूज नहीं करते। दिल्ली की सबसे बेहतरीन गुजिया की तलाश में हम आ चुके हैं चांदनी चौक के घंटे वाला। और इस दुकान की लेगेसी काफ़ी पुरानी है, 200 साल से ज़्यादा पुरानी है ये दुकान। और कहा जाता है कि मुगलों के समय में भी ये दुकान हुआ करती थी। और यहाँ की गुजिया सबसे मशहूर गुजिया में से है। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो मैं पढ़ रहा था जब मैं सारे कहाँ सबसे अच्छी गुजिया मिल सकती है उसके बारे में सर्च कर रहा था, तो इसका भी नाम आया। और हम यहाँ देख रहे हैं आपके पास कई सारे तरह की चीज़ है। किस तरह की वेराइटीज़ है, थोड़ा अगर आप एक्सप्लेन कर सकेंगे तो। ये हमारी, जैसे कि ये मैं आपको दिखाऊं, ये गुंजिया है, ये नॉर्मल गुंजिया है, ठीक है जी। फिर ये आती है एक रिवियोली गुंजिया हमने रखी है। रिवियोली, हाँ, जिसे आप गोल तरह के, गोल राउंड शेप की गुंजिया है ये। फिर ये आ गई केसर, ये आ गई पिस्ता, और ये आ गई रोज। तो रोज गुजिया मुझे खास तौर पे काफी कलरफुल लग रही है, अलग तरह की लग रही है। इसकी फिलिंग में क्या है, थोड़ा अगर बता सकते हैं? फिलिंग में जैसे खोया होता है, सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, थोड़ी सी चिरौंजी होती है, और ऑन टॉप ऑफ इट इसमें थोड़ा सा हम रोज का जो है, जो पेटल्स है, उसका भी इस्तेमाल किया है। ऐसी क्या यूएसपी आप बताना चाहेंगे जो आपके पास है, जो बहुत खास है गुजिया में? खास तौर गुजिया में खास तौर से मैं रोज और पिस्ता की बात करूंगा, क्योंकि हम जो भी चीज़ बनाते हैं, जो भी गुंजिया बना रहे हैं, कोई भी आपको मिठाई मिलेंगे, इसमें एसेंस, आर्टिफिशियल कलर यूज नहीं होता, प्योर है। तो अगर आप चांदनी चौक के इलाके में हैं और आप अच्छी गुजिया तलाश करना चाह रहे हैं, तो घंटे वाला एक वो जगह है जहां आप ज़रूर आएँ। इतिहास तो इस दुकान का है ही, लेकिन साथ ही आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी की गुजिया भी मिल जाएगी। और पूरे देश में होली की धूम है। बाजार होली के रंगों से, साजो सामान से सज चुके हैं। इस बार रंगों और पिचकारी में कैसा है मार्केट, क्या है ट्रेंड, जायजा लिया केतन जोशी ने।
पिचकारी और रंगों से अहमदाबाद का बाजार भी गुलजार है। इस वक्त हम एक दुकान में मौजूद है जहां हर प्रकार की पिचकारी मिलती है और कलर भी। तो आइए हम दुकानदार से इस बार की कौन कौन सी वैरायटी है उसके ऊपर बात करते हैं। बताइए कितने से कितने तक की पिचकारी आपके पास अवेलेबल है? 20 रुपए की पिचकारी से लेके 1800 रुपए तक की पिचकारी है। फिर ऑर्गेनिक सिलेंडर्स है मेरे पास, और टैंक में मेरे पास ये छोटा भीम, मोटू पतलू, फिर एवेंजर्स है, मिक्की माउस है, वो सब तरह की टैंक मेरे पास अवेलेबल है। लोग कितने की चीजें ज्यादा प्रेफर करते हैं? अभी इलेक्ट्रिक गन ज़्यादा चलती है सर। और वो इलेक्ट्रिक गन 750 वाली भी आती है, 1300 वाली आती है, 1800 वाली आती है, वो भी ले जाती है पब्लिक। ऑर्गेनिक कलर में कुछ खास पिचकारी है? वो सिलेंडर्स होता है और डबल जेट बुम बुम करके सिलेंडर आता है, वो ज़्यादा चलता है सर। ऑर्गेनिक होता है? ऑर्गेनिक होता है सर। इस बार मार्केट कैसा चल रहा है? ये 2 दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, देखते अब क्या होता है सर। बिल्कुल, तो आने वाले 2 दिन है वो काफी महत्वपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी ग्राहकी यहाँ देखने को मिले और लोगों के जीवन में भी उनका जीवन है वो पूरा रंग भर रहे। और इस होली के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम आशा करते हैं कि सबके जीवन उत्साहपूर्ण रहे। केतन जोशी, अहमदाबाद। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा CNBC आवाज़ पर, और आप 24 घंटे जुड़े रह सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।